Dear students, welcome to A1 Blom Education YouTube channel. A1 Blom Education YouTube channel दशम श्रेणी समस्त छात्र छात्री मानक स्वागत करुछि। आज आम देखा गोटे रिविजन क्लास ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल पोएम रो हैला। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। प्रथम क्वेश्चन देखिए, हु रोट ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। पिला माने ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल पोएम होची गोटे कोन ना यूलॉजी। कोन ये पोएम होची गोटे यूलॉजी हैला। यूलॉजी कहले हम कोन कहबा ना स्तव है कि भगवान को गोटे स्तव, भगवान को हमें गुणगान करा जाइछि। ए कविता रे भगवान को प्रशंसा करा जाइछि। ए कवितार लेखिका होचंती सीएफ अलेक्जेंडर सेसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर हैला। से जन्म होइथिले 1818 रे आयरलैंड डुब्लिन हैला। कोठी ना डुब्लिन रे। डुब्लिन कहार राजधानी ना आयरलैंड राजधानी हैला। आयरलैंड मन रहा। नेक्स्ट को जीवा, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल ये गोटे कौन। ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल ये हूँ गोटे स्तव बा हाइम कहला। ये कौटू आछि हाइम फॉर चिल्ड्रेन है। ये कविताटी आछि हाइम फॉर चिल्ड्रेन है। काव्यगुच्छ आसी हाइम फॉर चिल्ड्रेन। नेक्स्ट को जीवा, क्वेश्चन नंबर 3, द पोएम मेनली एक्सप्रेसेस। तले कविता रे कहा को गुणगान करा हिची, कहा ऊपर प्रकाश करा जाइछि ना भगवान को। प्रेज ऑफ गॉड्स क्रिएशन, भगवान को सृष्टि को प्रशंसा करा जाइछि हैला। क्वेश्चन नंबर 4 को आसीबा, अकॉर्डिंग टू द पोएम हु मेड ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। ताले ब्राइट एंड ब्यूटीफुल तो मुझे कही क्यों पोएट क्यों अलंकार, ये हूँ एलिट्रेशन है। अनुप्रास अलंकार नुहे कि जिते बड़े गोटे कनसोनाट रिपीट होता पिला माने आमे ताकू कौन कहबा, ताकू कहबा अनुप्रास अलंकार है। तेणु ये राइट आंसर होची गॉड है, ऑलमाइटी गॉड। बर्तमान आसवा 5 नंबर को, what is the meaning of the word bright in the title suggests। तेरे कविता रे दिया हितवा ब्राइट शब्दटी कहा को इंडिकेट करूची। ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ब्राइट रो अर्थ पिला माने होची ब्यूटी एंड रेडियंस हैला, सौंदर्य एवं उज्जवलता को प्रकाश करूची हैला। ब्राइट एंड रेडियंस। नेक्स्ट को जीवा, ताले कवि कौन कहते कविता किए मुझे कही सारी बिगिनिंग रू सीएफ अलेक्जेंडर हेलो। द पोएट सेज दैट ऑल थिंग्स आर ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। क्वेश्चन नंबर 7, द पोएम सेलिब्रेट्स द ब्यूटी ऑफ। ताले ये कविता रे कहा को सुंदर बोली कहुचे ना भगवान जहाँ भी सृष्टि करछंती, जहाँ भी तांकर सृष्टि संभार प्रत्येक रूपरेखतार प्रत्येक जिनिस को प्रत्येक सृष्टि को कवितार सुंदर बोली कहुई। तेणु ऑप्शन सी राइट आंसर, ऑल ऑफ गॉड्स क्रिएशन। 8 नंबर को आसीबा, द पोएम मेंशन्स क्रिएचर्स दैट आर। तले कवि कहिछंती जहाँ भी सृष्टि, जहाँ भी प्राणी, जहाँ भी जीवजंतु सृष्टि होती से छोट हो कि बड़ हो सब सुंदर। तेणु ऑप्शन सी राइट आंसर, बोथ ग्रेट एंड स्मॉल। 9 नंबर आसिया बर्तमान, ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल एम्फासाइजेस। ताहले ये होची सृष्टिर विभिन्न रूप ना, द वेराइटी ऑफ क्रिएशन। ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल एम्फासाइजेस द वेराइटी ऑफ creation। Let's come to question number 10, according to the poem God made। ताले कविता अनुसार भगवान सब सृष्टि को सृष्टि करिसेंती हैला, all things। Question number 11, the poem refers to the flowers of different colors। ताले कविता रे विभिन्न फूल है, विभिन्न रंग बेरंगर फूल संपर्क में आलोचना करा जाइछि। ऑप्शन ए हूँ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12,
The poem mentions the sky is being dash. What is the right answer? Right answer होची blue है से आकाश कौन ना ब्लू देखा जाउची. The shining is represented as a part of ताले जो shining होची shining sun rising sun by shining sun से होची भगवानंकर अन्य एक सृष्टि God's creation of option है ହେଲା. It is the presented as a part of God's creation. 14. The poem includes the beauty of mountains also ହେଲା. Factories नुह cities भी नुह machines भी नुह ना पर्वतर सौंदर्यता विषय कवितार मध्य उल्लेख करा जाइछि. 15. पर्पल हेडेड माउंटेन होची पिला माने ये होची गोटे इमेजरी पोएटिक डिवाइस रो उदाहरण हैला. जदि के माइंड रे गोटे हमर मेंटल पिक्चर जदि क्रिएट करे मानसिक स्तर रे एक छवि जदि आंकी दिए सही परि अलंकार गुडी को इंग्रजी भाषा रे इमेजरी कहंते हैला. रिवर रनिंग बाय बही जाउथिबा नदी appeals mainly to our sense of sight and movement हैला. sight and movement. 17 नंबर को आसीबा. The phrase running by is used for पहले running by शब्द री कहाँ पे व्यवहार करा जाइछि ना river. ऑप्शन बी. 18. The poem describes the natural world as beautiful and harmonious है ना. Beautiful and harmonious. Question number 19. The poet believes that everything has been created according to गॉड भगवान का आदर्श अनुसार ए पृथ्वी प्रत्येक जिनसर सृष्टि. पोएट बिलीव्स दैट एवरीथिंग हैज बीन क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू गॉड्स विजडम. ताले कवितार केंद्र बा मुख्य मेसेज कौन है मुख्य वार्ता कौन. ऑप्शन बी हेबो क्रिएशन रिफ्लेक्ट्स गॉड्स ग्रेटनेस है. क्रिएशन रिफ्लेक्ट्स ताले जो भगवान कर सृष्टि भगवान कर मोहनीयता को उज्जीवित करिछि बा रुधिवंत करिछि हैला. क्वेश्चन नंबर 21 को हम आसीबा. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल ऑब्जेक्ट मेंशन इन द पोएम. तले कविता रे उल्लेख होइथिबा केउ ऑब्जेक्ट एक नेचुरल ऑब्जेक्ट. माउंटेन हैला. माउंटेन पर्पल हेडेड माउंटेन जो कहा जाइछि हैला. Which celestial object is mentioned in the poem? Sun है. The poem teaches us this. The poem teaches us to appreciate God's creation. भगवान के सृष्टि को प्रशंसा करिया पे है. Each little flower that opens suggest the beauty of flowers है. फूल मानकर सौंदर्य विषय कह जाइछि. The word little in the poem emphasizes delicate beauty of flowers है ना. फूल गुड़िकर सौंदर्यता विषय लिटिल शब्दटी माने गुरुत्व दे था सूचित करता है. The poem presents nature as a dash divine creation है ना. The poem presents nature as a divine creation. 27. The rich man in his castle contrast with the poor man at the gate है ना. The rich man in his castle contrast with the poor man at his gate. The contrast between rich man और कौन poor man क्या को हाईलाइट करे ना सोशल डिफरेंस को हाईलाइट करता है ना. The rich man is described as living in a castle है ना. The poor man is described as being at gate. तेले कविता रे जो सामाजिक दूरता
विषय कौन शिक्षा मिली थाए द पोएम सजेस्ट दैट सोशल डिफरेंस आर आल्सो पार्ट ऑफ गॉड्स अरेंजमेंट से मध्य भगवान गोटे प्रकार सृष्टि है व्हिच वर्ड इज क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ ब्राइट ब्राइट रो सिनोनिम कौन रेडिएंट हो पार ग्लो भी लिखिपर है ग्लो ब्यूटीफुल अपोजिट कौन हम अग्ली हम है ब्यूटीफुल हूँ गोटे एडजेक्टिव है ब्राइट फंक्शंस आज ये मध्य एडजेक्टिव ब्राइट मध्य गोटे एडजेक्टिव है द रिपीटेड यूज ऑफ ऑल इन द पोएम क्रिएट्स जदि बारंबार ऑल शब्द टी व्यवहार होइछि इट एम्फासाइजेस द पोएम है ऑप्शन ए हम राइट आंसर 37 द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर साउंड्स इन नियर बाय वर्ड्स इज कॉल्ड एलिट्रेशन मु बारंबार कही आसी एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड सिमिलर साउंड कहबे कॉन्सोनेंट साउंड कॉन्सोनेंट थिबो बा कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट होथिबो दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन पर्पल हेडेड माउंटेन होची गोटे विजुअल इमेजरी पिला माने हला इमेजरी किंतु विजुअल इमेजरी द पोएम इज प्राइमरी रिटन इन डिवोशनल टोन है कविता मुख्यतः डिवोशनल टोन रे ही लिखा जाइए द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द नेचर ताले कविंकर प्रकृति प्रति जो भाव है प्रशंसार भाव प्रस्फुटित हुए बा देखा देइछि एडमिरेशन है द पोएम सजेस्ट दैट इवन द स्मॉलेस्ट क्रिएचर इज पार्ट ऑफ गॉड्स क्रिएशन जदि आम छोट प्राणी गोटे भी देखिए ताकू मध्य भगवान तैयारी कर ग्रेट एंड स्मॉल इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रेट एंड स्मॉल ये हूँ ऑक्सीमोरन पिला है ग्रेट स्मॉल जो दुईटी अपोजिट वर्ड थाए ताकू आम इंग्राजी ऑक्सीमोरन बोली कही था ऑक्सीमोरन पोएटिक डिवाइस है देखिए ऑप्शन रे कौन अच्छी कंट्रास्ट देछि कंट्रास्ट भी हो पारिबो है जदि विचार करा जाए ये हूँ क्यों अलंकार बा क्यों पोएटिक डिवाइस तुम ऑक्सीमोरन लिखिबो ऑक्सीमोरन ऑक्सी मीन्स अपोजिट मोरन मीन्स वर्ड्स है ना 43 द पोएम एनकरेजेस पीपल टू रिकॉग्नाइज द ब्यूटी एंड ऑर्डर ऑफ क्रिएशन है ना द ब्यूटी एंड ऑर्डर ऑफ क्रिएशन 44 which of the following best describes the poem's theme divine creation and natural beauty option B 45 को आसीबा the poem is suitable for singing because it is a hymn ताले कविता को ये हूँ गोटे गीति कविता बा स्तव है ताको बोला जाई पारे से हाइम कह जाए है बा यूलोजी भी आम कहीपर है यूलोजी सेसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर वाज प्राइमरली नोन एज ए हाइम राइटर एंड पोएट है से जने हाइम राइटर एवं पोएट 47 द नेचुरल इमेजेस इन द पोएम हेल्प द रीडर टू विजुअलाइज गॉड्स क्रिएशन ताले यही कवितार आम जो प्रकृति जिनस गुड़ी देखिले प्रकृतिर द्रव्य गुड़ी देखिले सृष्टि को देखिले ताहा आमको भगवान सृष्टि को जानापी उज्जीवित कर देछि है द पोएम प्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड नेचर ताहले भगवान और प्रकृति भितर थिबा संपर्क को कवितार आलोकपात करा जाइछि आज गॉड एज द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स देखिए ऑप्शन डी गॉड इज द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स बट गॉड इज द क्रिएटर ऑफ द नेचर 49 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइजेस द पोएम ताले कविता को उज्जीवित करुवा कौ लाइन टी बाछ गॉड हैज क्रिएटेड ए ब्यूटीफुल एंड डाइवर्स वर्ल्ड ताले विविधता मध्य एक सुंदर पृथ्वी गढ़ी प्रभु है गॉड लास्ट पोएम लास्ट क्वेश्चन को जीवा
The ultimate purpose of the poem is to praise the creator through his creation. So dear students, if you came to this channel firstly, don't forget to like, share and subscribe. This is your channel A1 Blom Education. Thanks a lot. God bless you. Have a nice day.